First, I hope you all from MBA, right? MBA. You all from commerce background, or are you, some of us from science background also? Science. And how many of you are from arts? When you left your mathematics, which class? 12. Okay, so that means you completed your 12th with math. And you? 12. 12. Okay. So I am asking because SPSS is a statistical software. SPSS is a statistical software. Why we use it? Do you know that? Why do you SPSS? So I hope some of you have seen the software, right? The Excel data आप लोगों ने Excel. Yes, sir. So it look like same as an Excel. SPSS, if you see here SPSS, then it look like Excel. Why we use Excel? Excel use किया आप लोगों ने? हाँ? डेली बेसिस पे क्यों यूज करते हैं Excel? Record data. Anybody else? Calculation. Any one of you have done the calculation in Excel? What kind of calculation? So that majorly, if you will see that majorly a mathematical calculation, right? So all of the calculation if you will see in your Excel, it's a more or less a mathematical calculation. If you are doing some calculation on some text value, that is also a quantitative calculation. Okay. So when we talk about SPSS, SPSS is all about analyzing the data. We use SPSS to analyze the data. Okay. But first, we should know how to get the data into SPSS, because until unless we will not get the data into SPSS, we will not be able to do anything. Right. What is the full form of SPSS? Do you know that? I am also not confirmed, but it's a statistical program for social science. Maybe social science. Okay, and that is one of the IBM software now. Earlier it was not of IBM software. IBM later acquired one of the companies, that is the SPSS. Okay. Most of the research companies use the SPSS. Okay, commercial companies are not using SPSS because of some reason, because we need license, we need certain type of expertise, and SPSS in terms of data leverage, we have very less leverage in comparison to other tools we have. So other tools, आप लोगों ने इतने सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे आपके कैंपस के अराउंड, आपको हमने डाले हुए हैं, seen that machine learning with artificial intelligence. Anybody has attended that workshop? Because I think that workshop they arranged in their facility itself. So I think they are not. So have you heard about machine learning? Huh? मैंने लास्ट ईयर देखा. ओके, मैंने ये तो पूछेंगे बीच में, कौन से ईयर में आप लोग? फर्स्ट ईयर. तो मैं लास्ट ईयर भी मैंने सेशन लिया था. आई थिंक दो स्टूडेंट आल्सो. So machine learning, you have not heard about machine learning, right? Analytics सुने किसी ने? Analytics. If word is not clear, you will have some problem with words. Analytics. Word सुने? कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना? कोई बात नहीं. I'm not going to ask कि what is analytics. अगर सुना है तो सुना है. कहाँ पे सुना है ये भी बता. क्लास में सब्जेक्ट में यूज होता है. किसी ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेशन में स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ा है? कोई है सब्जेक्ट स्टैट्स का? हाँ? सब्जेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता वर्ड कहाँ सुना है, क्यों सुना है. सोचा कि कोई सब्जेक्ट की क्वेश्चन होगा तो स्टार्ट कर देना. And I'm not going to ask the question, but why I am asking,
Because nowadays analytics is very important part for MC and MBA student. Most of the students from professional programs like BTech, MCA and MBA, generally company are looking for those professionals who have some analytical knowledge. And to get the analytics knowledge, हमको पहले कुछ सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर नहीं, I would say you should have one knowledge of one software at least. Okay, we have not many software in the market. Apart from SPSS, we have SAS, R, we have Python, we have not many software. SPSS is one of the software. We can do analytics into Excel also, but it's little difficult because when data get increased or when you have to apply and give data, Excel won't help you because sometimes it gets crashed or sometimes it gets hanged. There are so many problems in the Excel, so that's why these softwares are in the market. SPSS, as I said, SPSS, most of the research company uses SPSS for their research program. So whatever kind of research they are doing, generally we call it analysis. So how they perform research? Research is something, they collect the information, okay, based on that particular, what is information actually? What is information? Okay, what is data? Huh? Facts and figures. Okay. So when we visualize data, in what form we can visualize it? I mean to say, what is the structure of a data? Any information is a data, or any information particularly in a table is only a data? All information are data, and data can be in structure of rows and columns. But every information which is not in your rows and columns can also be a data. So it's not necessary that if information is not in rows and columns, that means not a data. So how research company works? Research company collect the information, they put into rows and columns so that they can analyze the data, because a human being can analyze the data in rows and columns better in comparison to other structures that we have. And most of the software, when they apply any method, generally they need the data in rows and columns. So rows and columns, सबको ही पता है, टेबल सबने देखी होगी, है ना? Most of the people, I hope 95% people must have seen the data in rows and columns. ठीक है? I think the window is not clear, but you can see that information is in rows and columns, right? I'm not saying that there is information, some information, but this particular structure is in rows and columns. So we have some rows, we have some columns. Okay. So that is our first objective when we work on SPSS. If we have to do some analysis, we have to get the data into SPSS, okay, and that should be transformed into rows and columns. But generally we expect at a very initial stage or at a beginner stage, we expect कि हमारे पास जो data आएगा that will be in your rows and column form. Okay. So when you have data in rows and columns, it might be saved in your Excel, it might be saved in your CSV, it might be saved in text file, it might be saved in SQL, it might be saved in any other database. So have you heard about CSV? CSV का आपको पता है किसी को? CSV फॉर्मेट होता है, एक्सेल का ही फॉर्मेट होता है. So we call it as comma separated value file. Comma separated because sometimes we get the data which is separated by comma. Okay, and in CSV most of the data separated by comma only. Okay, so this is one of the Excel file. Because it's a database file of Excel. So in this particular file we can save the data and we can get the data in SPSS. Why we save the data in CSV? Because
CSV में we can't format, we can't color, we can do that bit but we can't save it. So अगर आपकी किसी फाइल में आपने कुछ कलर नहीं किया हुआ, आपने कुछ उसके अंदर फॉर्मेट नहीं डाला हुआ, you have not used any formula in your Excel, तो आप कभी ध्यान देना आपकी जो एक्सेल फाइल है वो उतनी लाइट होगी. अगर आपने उसमें कलर किया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया हुआ है तो एक्सेल की फाइल की हेवी होगी. जितनी आपकी एक्सेल की फाइल हेवी होगी, सिस्टम विल टेक टाइम टू गेट द डेटा इन स्पेसेस. राइट? So that's why we use different format. We use Excel, we use CSV, we use text file, and we use not many other database. For other database, we need password, we need user ID and password. Like for SQL, we need user ID and password. Okay. So I will show you how can we get the data from Excel to SPSS, from your CSV to SPSS. I'm not sure what all information I have in this system, but I'll try to show you most of the information. So when I was saying that if we are like doing certain analysis, we can do quantitative analysis, but we can also do some qualitative analysis. So do you understand the difference between quantitative and qualitative? Understand? So we have some values, like if we have some numbers, then we can do quantitative analysis. But if we have some character values, then we can perform qualitative analysis. So to understand that, what is your numeric data and what is your character data, find differently, little differently. Okay. So I'll tell you first what is the generic structure or what is the generic type and subtype of data, and then I will also connect with the SPSS and what is how it is showing in SPSS also. Okay. So as I said, age is character or numeric? Age is numeric. City, character. Good. Your Aadhaar card number. Aadhaar card number होता है. PIN card. बोथ तो होते हैं कुछ. Either it will be numeric or character. How many say that it's numeric or how many say that it's character? What if something is alphanumeric? Alphanumeric होती है value है ना? Yes, sir. What if something is alphanumeric? System reads alphanumeric value as a character value. Okay. Pure numeric value will be numeric. Apart from that, all other values will be character. Whether you have any special character, whether you have any character, any mix of character numeric values, it always be a character. You can never define it as a numeric value. Okay, one more statement. A numeric value can saved as a character, but a character value cannot saved as a numeric. Do you agree with me or not? Do you understand what I am saying? मैं एक नंबर को एज अ कैरेक्टर सेव कर सकता हूँ, एज अ कैरेक्टर टाइप सेव कर सकता हूँ, बट मैं कैरेक्टर को न्यूमेरिक टाइप सेव नहीं कर सकता. सो डेटा के अंदर वेरिएबल वी सेव द डेटा. डेटा के अंदर जैसे ये वैल्यू आपके यहाँ पे नजर आ रही है अभी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस वन इज शोइंग नंबर, है ना, बट इट माइट बी अ कैरेक्टर. अगर ये बैकएंड में एज अ कैरेक्टर सेव होगी, आई विल नॉट एबल टू डू एनी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि डेटा के अंदर ये एज अ कैरेक्टर सेव है. ठीक है, दिखने में वो नंबर है बट इट माइट बी अ कैरेक्टर. कैरेक्टर कैन नेवर बी न्यूमेरिक. कोई सिस्टम को, मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर एज अ न्यूमेरिक सेव नहीं कर सकता, तो इट हैज अ मिक्स वैल्यू. ठीक है. Now let's go back to data type. In quantitative, again we can segregate into two parts: numeric to continuous
and discrete. सुनिए दो वर्ड. Very good. आप सबके I think सबके पास business analytics है. Very good. Business analytics में सबके पास सबने I think ये पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. What is continuous? What is discrete? हाँ? जब इनिशियली फर्स्ट आपका सेशन स्टार्ट हुआ होगा, कितने सेशन हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के? कितने मंथ हो गए आपको फर्स्ट ईयर में? हाँ? याद नहीं है? When your session was started? Last August, September, October, November, 4 month, almost 6 months, है ना? August 1. So it's almost 1 year, ना? So that's why I'm saying कि आपको at least जो बहुत basic है business analytics का वो आपको पता होना चाहिए. I'm not sure you don't want to answer. But what is continuous variable? Anyone want to answer? It defines the range. One example. It defines the range. It defines the range. Anybody else? Analytics में variable का मतलब column name होता है. It's not variance. It's variable. Vary जहाँ पे लग जाए उसका मतलब ये नहीं change हो रहा है. Vary का मतलब हमेशा change नहीं होता. Variable is something, a column name. जब आपका रिजल्ट आता है तो एक कॉलम में आपका नाम होता है और उसके अगेंस्ट में नंबर होते हैं ना. लिस्ट में देखते हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हो ना, या किसी का भी नंबर देख के ये तो अज्यूम नहीं कर लेते मैं पास या फेल हो गया, है ना. एक कॉलम में सब पता होता है ना आपको. एक कॉलम में आपका नेम है, दूसरे कॉलम में आपके मार्क्स हैं, तीसरे कॉलम में आपका रोल नंबर है. नेम सेम हो सकता है बट रोल नंबर कांट बी सेम, है ना. सो these column name are variable. Variable name are identifier. ये एक particular row कैसे identify की गई है, ठीक है. So what I am saying, continuous variable, जो continuous जो भी column होते हैं जिनके अंदर fractional value आ सकती है. It can be non-fractional, it can be fractional. Number of family members. Right. बिल्कुल correct example है number of family members. ठीक है. Count cannot, number of person cannot be in fraction. Right. Total number of people visited in a particular place. Okay. जैसे फुटबॉल प्लेयर्स या क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं उनके जर्सी के नंबर होते हैं. Right. These number cannot be in fraction. Right. So these variable are discrete variable. So when we apply statistics or when we apply analytics in any data in SPSS, so every type has certain measurements. Type is what? Type is this particular area. Okay. And what is measurement? तो इसके नीचे का मैं आपको सब कैटेगरी बता रहा हूँ. That is in measurement. ठीक है? याद रहेगा? So whenever you get the time, you can ask your teacher and you ask your whoever is reading the computer. You can ask more SPSS and you can set up the system. Because nowadays, frankly I'm telling you, जब आप प्रोग्राम करके सेकंड ईयर में बाहर निकलोगे, एनालिटिक्स की इस वक्त मार्केट में बहुत डिमांड है. Okay, you should thank to your college कि उन्होंने एटलीस्ट बिजनेस एनालिटिक्स आपके प्रोग्राम में ऐड किया. Gradually, lot of colleges have started adding this particular program. But your program सिर्फ आपकी books से नहीं है. Everything is statistics. But you have to understand the statistics in more practical way. ठीक है? If you want more knowledge, if you want deep insight about what is analytics, how it works, what all things are going on in the market, you can go on this website. You can see flat line. ठीक है, फ्लैट लाइन का मतलब बहुत कुछ होता है. फ्लैट लाइन का मतलब अगर आप PCT की बात करो, फ्लैट लाइन का मतलब फ्लैट, ठीक है. और वहीं पे अगर फ्लैट लाइन का मतलब अगर मैं कमर्शियली देखूं तो इसका मतलब ये रेवेन्यू इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड. ठीक है. सो दीज आर द मीनिंग दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम द ग्राफ सिस्टम.
from the report itself. These are normal data analysis. We don't require any statistics. But in statistics, you need lot many things. First, you have to infer certain numbers. So इस pieces के अंदर it's totally statistical package. इसमें बहुत सारी statistics है. तो इसमें data analysis भी है, इसमें statistical analysis भी है. So to understand the statistical analysis, आपके पास वो background या आपके पास वो knowledge होनी चाहिए. So that's why I am giving you very basic knowledge about what is discrete and what is continuous. Apart from that, in character, we have a nominal and ordinal. ये nominal लिखा है मैंने. Nominal and ordinal. Nominal and ordinal सुना है? Nominal and ordinal. नहीं? क्या होता है nominal? क्या होता है nominal and ordinal? Nominal and ordinal. मैं आपको सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल बताऊंगा. वेरिएबल व्यू में फर्स्ट इज Gust ID, कस्टमर ID. Okay. There are lot many things I'll tell you later on. Customer ID type is showing string. So string in SPS is what? String is character. ठीक है. We don't have any other option. अगर आप इस पे क्लिक करोगे, इस डॉट पे क्लिक करोगे, नजर आ रहा है मुझसे आपको? आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, you can see the option that we have. We have lot many option, but generally initially we choose either it's a numeric or string. So these two option is for numeric and character. Okay. So where it will be type will be string. Where type will be string, so you have to directly look at your measurement. So जो customer ID है, it's a character variable, right? Character variable के अंडर कौन सा ऑप्शन आता है? Either it will be nominal or ordinal. So what it will be? Will it be nominal or ordinal? Nominal, ठीक है? और उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया. कुछ चीजें वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है स्पेसेस, और बाकी चीजें आपको चेक करनी होगी. सो योर फर्स्ट टास्क इज टू लुक एट मेजर, कि जो मेजर है वो स्पीसीज ने करेक्ट आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया. ठीक है, बिकॉज डेटा आपका है, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा है. ठीक है, स्पीसीज में बैकग्राउंड में कुछ एल्गोरिथम यूज होते हैं जिनके बेसिस पे वो ये चेक कर लेता है कि कौन सा वेरिएबल नॉमिनल, ऑर्डिनल या कंटीन्यूअस है. बट इट्स नॉट ऑलवेज श्योर शॉट कि जो उसने वहां पे आइडेंटिफाई किया वो करेक्ट ही है. सो यू हैव टू वैलिडेट इट आल्सो. सो फर्स्ट थिंग इज करेक्ट, राइट? हमारा कस्टमर आईडी इज राइटली मेंशन एज नॉमिनल. सेकंड पे आते हैं. सेकंड वेरिएबल इज रीजन, राइट? लेट्स लुक एट समथिंग continuous. So here is your age variable. Again, age variable we are showing as numeric. Okay, and against that ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? So जब भी आप numeric के against में देखोगे, तो मैंने आपको क्या बोला था? न्यूमेरिक वेरिएबल कैन सेव्ड एज अ कैरेक्टर आल्सो. इसीलिए उसने न्यूमेरिक के बाद आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्केल के अलावा, स्केल के आपका नथिंग इट्स अ कंटीन्यूअस वेरिएबल. एसपीएसएस में जो कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है, वी शो इट एज अ स्केल वेरिएबल. तो लेवल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में उस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, सो अगर आप उस वेरिएबल के बारे में डालना चाहते हो, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, यू कैन सिंपली राइट इट एज अ दिस पर्टिकुलर एरिया. कैसे डाल सकते हो आप? सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करके डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा. आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो.
let's suppose मैं करता हूँ customer ID of employees, anything that you want to show here. Okay, so that is your label. और लेबल शो कैसे होता है? आप जब भी इसका लेबल शो यहाँ पे चेंज करोगे, आप जब इस पे कर्सर लेके जाओगे, कैन यू सी दैट यहाँ पे कि आपको इसकी 3 कैटेगरी बनानी है, ठीक है? पहली कैटेगरी में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहली कैटेगरी में आपको जिसकी हाउस होल्ड इनकम 9 से लेके 100 तक है, उसको पुअर कर दो। 100 से लेके जिसकी 700 तक है, उसे मीडियम रेंज कर दो, और अगर जिसकी ग्रेटर देन 700 है उसको रेंज कर दो। अब आपको जैसे मैंने वहां पे जाके मैं इसके अंदर था और मैंने कहाँ से चेंज करी थी? पहले यहीं से चेंज करी थी। किसके अंदर करी थी? इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर करी थी। तो अगर मैंने उनकी क्या करूंगा, आपको उसकी यहाँ पे क्या डिफाइन करनी है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये डिफाइन है ना यहाँ पे, ओके करो, ठीक है, डन हो गया। आप कैसे करोगे इसे चेक करने के लिए करेक्ट हो या नहीं हुआ है? गो टू डेटा व्यू, ऊपर जो ट्री है उसे एक बार क्लिक करो, जो और राइट में जाओ, राइट में जाओ, जहाँ पे 1 और A लिखा हुआ है, बताओ इसको जरा। नहीं, जहाँ पे 1 और A ऊपर मेन्यू के जो आइकन्स बने हुए हैं, देखा नहीं था उस वक्त लगता आपने, जहाँ 1 और A लिखा हुआ है, आ गया? ठीक है, हमारे पास 15 मिनट हो रहे हैं। 15 मिनट में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अगेन आई विल एक्सपेक्ट कि कोई यहाँ पे आगे से करके दिखाए। सिंपल मुझे क्या करना है, एक्सेल फाइल को एसपीएस में लेके आना, ठीक है? आई एम नॉट श्योर यहाँ पे एसपीएस फाइल है कि नहीं है, बट मैं इसी फाइल को उठा के वापस डेस्कटॉप पे लेके जा रहा हूँ। फाइल किसमें है? एक्सेल वाले ऑप्शन में, एंड हियर इज माय डेटा। आई विल सिंपली क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, ये देखो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। अगर आपको रेंज डिफाइन करने के लिए, आपको पता है कि एक्सेल फाइल के अंदर रेंजेस होती हैं, सेल A1, सेल A2, अगर वो आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। किस वर्कशीट से डेटा चाहिए वो वर्कशीट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अगर आप देखोगे तो आपके डेटा का प्रीव्यू यहाँ नीचे भी नजर आ रहा है, देख रहे हो आप? इसका मतलब डेटा पूरा करेक्ट आ रहा है आपके डेटा इसके अंदर, एसपीएस के अंदर। कौन सी टाइप की फाइल करना चाहते हो? एसपीएस नहीं, अब एक्सेल करना चाहते हो। एक्सेल चूज करो, 2010 वाले जो ऊपर गया, 2010 ऑप्शन। नाम क्या रखना चाहते हो? कुछ भी नाम रख दो, अपने नाम से रख दो। क्या करोगे अब? सेव। राइट साइड वाला, ये नहीं, राइट साइड में जो सेव है, सेव, ठीक है ना? अब एक बार चेक करोगे डेस्कटॉप पे जाके, फाइल सेव होगी आपकी। दिव्यांशु हो गई है, डेटा आगे क्लोज कर दो इसे, ठीक है? वापस इस पीसेस में जाओ, कोई भी फाइल ओपन कर लो, ये कर लो। अब यहाँ पे अब आपको वापस वही डेटा यहीं पे लेके आना है। क्या करोगे? फाइल, क्या करना है? ओपन करना है ना, ऑलरेडी एक डेटा। पहले सेव एज क्यों किया? बिकॉज यू वांट टू सेव एज इनटू एक्सेल।
ठीक है. Now what you want, you open the data. So go to file, open data. Which data and which type of data? क्या करना मुझे अब? चूज करो भी. File type. हो गया? CS. ऊपर ही है. Second. इससे नीचे है. Second last. फाइल नेम. अपना नाम डालो. ब्लैंक शीट खोल लो, फाइल पे जाओ, फाइल न्यू डेटा पे कर लो, न्यू डेटा, फाइल न्यू डेटा. ठीक है. अब फाइल दोबारा ओपन डेटा, उसी डेटा को लेके आना है आपको. फाइल File. टाइप्स. File type. फाइल टाइप. File type में. फाइल टाइप्स. नीचे file type. CS. 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 नीचे 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 बस ये इससे नीचे. CSV. ठीक है जी. और एक चीज नोट डाउन कर लेना दोबारा, आइदर यू कैन चेक complete program detail of this website or this website. Any one of the website you can check the complete program detail. ठीक है, क्योंकि that was a very short session और ये session 2 hours का नहीं, इसमें 2 hours में तो we can only see जितना भी हमने किया है 2 hours से ज़्यादा गई है. ठीक है, even in the 2 hours we can't learn each and everything. ठीक है. तो अगर किसी को लगता है कि इंटरेस्टिंग है और यू वांट टू लर्न सम मोर थिंग्स, ठीक है, आप एक बार डिटेल चेक कर सकते हैं इस पे जाके और क्या-क्या चीजें हैं एंड यू कैन. ठीक है. थैंक यू सर. That is all from my side and thank you so much for your patience and thank you.